Assalamu alaikum students. Today we are going to do Unit 2, The Storyteller, working with words and learning about language. So let's see what sort of exercises are there in these. Topic is working with words. Find words in the poem that rhyme with the following. Gold. बच्चों यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ये हमें दिए गए हैं और हमने देखना ये है कि इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो पोएम में कौन कौन से वर्ड हैं जो इनके राइमिंग हैं. फर्स्ट वर्ड इज गोल्ड, ओल्ड, गोल्ड एंड टोल्ड. दीज वर्ड्स आर राइमिंग. टेबल्स, फेबल्स. फायर्ड, टायर्ड. Peel, field. Straight, prayed, played. Defeat, repeat. Read, fed, bed. Muddled, cuddled. That is, put the following into the alphabetical exercise. Writing words in alphabetical order is not difficult, so let's start. These are the words. Let's see first these words: Dickens, Bond, Yeats, Shakespeare, Dryden, Keats, Shelley, Blyton, Sterne, Wodehouse, Addison, Gardner, Ludlum, Webster, Xenophon, Alcott, and last is Quincy. First we will see which words are starting with alphabet A. So first we see it's in the first line there is no word starting with A. In the second line is Addison and in the third line is Alcott. We would put Addison at the first place and Alcott at the second place. Reason is this, because after A here is D and after A there is L. बच्चे जब फर्स्ट लेटर सेम हो तो हम जो सेकंड लेटर है उसको देखते हैं. अब यहाँ पर D है, D comes first before L, so we would put Addison at the first place and Alcott at the second place. Then we would see that are there any words starting with B? Yes, there are two words starting with B, Bond, and in the same line is Blyton. We would put Blyton at the first place and Bond at the second, cause reason is the same. Here is L and here is O. L comes first and O comes afterwards. So we would put Blyton at the first place and Bond at the second place. The same rule applies to all the other words: Dickens, Dryden, Gardner, Keats, Ludlum, Quincy, Shakespeare, Shelley, Sterne, Wodehouse, Yeats, and last is Xenophon. There is no repetition in the second line, only there is repetition of alphabets as A, B, B and D. But the rest of the words, they are quite clear. I hope you understand my point. Let's move to the next exercise. It's find an exclamation in the poem about the storyteller. Make 3 exclamations based on the poem. Write them in your book. बच्चों हमने exclamations पढ़ी स्टोरी में, पोएम में. जैसे वो कहता है, what stories he told to the children.
और how can you tell it is an exclamation? It is having an exclamation mark at the end. Note that exclamations often start with what is normally regarded as a question word. जैसे हमने पोएम में पढ़ा what stories he told to the children, ये जो सेंटेंस है ये what से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड है. what is a question word? So जो एक्सक्लेमेशंस हैं ये यूजुअली क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती हैं. आपने कैसे देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये एक्सक्लेमेशन है या नहीं? तो आप शुरू में देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स होंगे या फिर प्रोनाउंस होंगे और एंड पर, उसी लाइन के एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. तो देन यू कैन से इट इज एन एक्सक्लेमेशन. व्हाट, हाउ, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स. ना ये अब वही लाइन जो हमने पढ़ी पोएम में, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड टू द चिल्ड्रन. नाउ यू कैन सी एट द स्टार्ट देयर इज अ क्वेश्चन वर्ड and at the end is a exclamation mark, so it's an exclamation, is an exclamation. What did he tell to the children? What did he tell to the children? It is not an exclamation because it is having a question mark at the end. It is a question with a different intonation, is a question. Exclamations also begin with pronoun. ये pronoun से भी बच्चों शुरू होती हैं, जैसे my aunt, my goodness, you fool. These are exclamations. Actually बच्चों exclamations जो होती हैं उनमें कोई ना कोई, जैसे feeling of fear, feeling of wonder, feeling of love, ये सारी इसमें पोर्ट्रे की होती हैं. देन वी कैन से इट्स एन एक्सक्लेमेशन. मेक अप 3 exclamations based on the poem. Now you have to make 3 exclamations of your own. For example, जब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, what a frightening story, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. what an interesting story, how sweet, how memorable आप कह सकते हैं sweet की जगह how memorable, how lovely, what a comfortable bed. वो आपने पिक्चर देखी है, उसमें बच्चे सारे बड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बेड पर लेटे हुए हैं, तो उसी से बनाई है कि what a comfortable bed. आप कह सकते हैं what a nice sight, what a beautiful sight. इसको आप चेंज कर सकते हैं. I wish I could listen to that story. I really wish I could listen to that story. तो बच्चों ये जो है, यानी ये ख्वाहिश है कि काश मैं भी उस स्टोरी को सुन सकता. सो इट्स एन एक्सक्लेमेशन. दीज आर एग्जाम्पलरी एक्सक्लेमेशंस. You try to make your own exclamations based on the poem. Thank you, students.